Ciao, ciao, dosto. Welcome to the evening of Dukh, Dard, Dispression. ये चिंतन मैं सुबह से आज नॉन स्टॉप मैं रील्स एंड शॉर्ट्स पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इट हैज बीन a day which has been one of the most awful days, man. I mean, Yeah. अपन ऑफ स्क्रीन जस्ट डिस्कस कर रहे थे कि मैं रात को जागा, देखा 3-1 थोड़ा गेम देखा. I knew that we are cooked, we have finished in this game. There is literally no Yeah. way back. But then again, just because Roma had to top it off, you had a red card, you had Hummels scoring an own goal. Yeah. What a way to make his Serie A debut. So overall, a nightmare. I mean, this is just added to one of the many nightmares that I have lived through the last 20 odd years being a Romanista. And मतलब एकदम मैं एक मीम है वो बाद में मैं पुल आउट करूंगा just to kind of show what's been happening. But Why? Yeah. एक Ajay, when I was seeing the game yesterday, I remember Ajay है किधर, and then of course your messages are not coming, and I know Ajay is he's a fitness freak. He gets up early in the mornings and all, and especially on a Sunday night, especially Monday work, when you have a yeah, game like this on a Sunday night, especially, probably it's वो the भी 130 hardest. वाला गेम है, 130. Yeah, it's the hardest to get up to. It is unbelievable. And जब ये वो गेम हो रहा था and वो जैसे मैंने मीम शेयर किया था, बोवे was doing so well. I was like, मतलब it was written, right अजय, it was written in the stars, यही होने वाला है. मतलब सब लोग सरप्राइज थे, पर अजय बोला ये क्या मेरे लिए कुछ नई चीज नहीं है. कुछ नहीं बात नहीं ये पता है चिंतन. WWE में क्या होता था, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आता था, randomly वो प्रकट हो जाता, you know what he's going to come and do, but you still love it anyways. You love Exactly. You love those random appearances, random stunners. But man, अजय यार, trust me, हम लोग आए हैं सिर्फ ऑब्जर्व करने को, सुनने को. अजय, mic is yours, channel is yours. Start from the top, or let's start from the team first. Let's go to the manager, and then final is the management. अजय, एक step करते हैं. Where do you think this team is lost right now? Juric का टोरिनो बॉल जो खेलता था, स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा है. Then let's come to the last is the management. क्या यार अजय, we want to hear this from you only, man. Like I think Param and I were discussing, Ivan Juric को अभी ये scapegoat तो बन गया already. It's not like he's going to become a scapegoat. He's become the scapegoat. It's an unfortunate place where he is. उसका कोई गलती है नहीं. He was not part of. Yeah. He never thought he would get this Roma job, right? So, but now if everything goes wrong, the blame comes on him. Like Ivan Juric का भी यही है कि with all due respect to Torino, Hellas Verona, this is a step up for him, and managing Roma is never easy, especially in this turmoil. So, Ivan Juric has shortcomings as a coach. Okay, he's got some positives, a lot of positives as well. I think this more than the coach, this comes under the management. Like ये मैंने rant video में भी बोला कि what are you expecting when you give De Rossi a 3-year contract? Of all people, De Rossi, like he is Mr. Roma. I would say more than Francesco Totti, De Rossi is a Roma fan. He's a proper ultra, like a Kurva Sood wala ultra का mentality है उसका. तो आप फिर how much he's loved and beloved by Roma fans. तुम उसको ही निकालोगे without any reasonable reasoning. Then Lina Suluku, who was the CEO and possibly the one who caused the rift, she resigns and goes for whatever reason. So it is already messed up at the top. That means things are not going right, and then you go and complete the purchase of Everton. और De Rossi का statement के पहले तुम Everton का statement डाल दो. Yes, we have acquired Everton. So the Kurva Sood have actually gone mild. मतलब Chintan, Param, Mitul, over the last so many years, all these ultras क्या extent तक जा सकते बोलना नहीं है. But they're just doing a 30-minute before the game and stuff like that. I think the shit has hit the fan. This is where the management, if they have any kind of balls, they need to take action. Possibly, I don't know what's going to happen in the next coming days. Pata nahi, will De Rossi come back? Will Juric stay? Will they go for another coach in the middle of the season? But कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उनको. They just can't kind of
stay there quietly in the shadows. They have to come out Yeah. and they need to get the house in order. That comes from the top. That has to come from the father of the coach. Whatever needs to be done. Coach, technical change, okay. हाँ. What about the boardroom change? Because Solu ko gayi hai, there is no CEO. ये सॉल्फी अकेला है. He is not. He is your sporting director, right? So he is not in charge of the other affairs. तो ये बहुत सारी चीजें हैं. And of course improve the on pitch performance, because you've had a summer where you signed Manu Kone, Dopik, all these players. They've come on the behest Yeah. of De Rossi. वो लेके आया है and they're completely disillusioned right now. So lot of things that need to be done, and things that have to be done ASAP, because otherwise ये सीजन तो ऑलमोस्ट राइट ऑफ ही कर लिया है. इट इज लिटरली हैंगिंग बाय थ्रेड. पता है वो बैग वाला मीम है कि बैग में वो एक ही धागा है, वैसे ही लटक रहा है. बस इसको अगर अभी नैया को पार लगाना तो यही टाइम है. इससे आगे हो जाए तो खत्म हो जाएगा. यू राइट ऑफ द सीजन like what we did 20 years ago with Prandelli unfortunately had to leave because his wife was ill. Then you had El Neri, then you had Rooney Waller, and then eventually Bruno Conte coming in. 20 साल के बाद वही, मतलब it's a repeat of that cycle unfortunately. It starts for you when like जब भी तूने स्टार्ट किया था देखना, वो टाइम like reliving चक्रव्यूह हो गया पूरा. It's yeah but we saw the game यार. परम हम लोग ने तो गेम देखा था. मतलब मैं जो पहले 35 मिनट्स मितुल अपने जो देखे थे ना, ऐसा लग रहा था फ्लोरेंटीना परम एवरी अटैक में गोल मारेगा. एवरी अटैक इतना मितुल इतना इजी. इट्स नॉट लाइक सम वर्ल्ड क्लास गोल्स. इतने इजी गोल्स मारे हैं. वो क्या था लाइक वो फर्स्ट गोल ऑफ मॉइसे कीन, वो जो 2-3 पास स्लिक मूव्स किए बेल्ट्रान के साथ उसने, कीन ने आउट ऑफ ऑल पीपल, एंड ही कैजुअली टच द बॉल एंड इट वेंट इन. By the way, all I want to say is Mitul actually wore purple. Firstly, एक वो है. Second जो बार-बार जो बोलता है again to Swilar also didn't move on the goal. He was not frozen intentionally. और जो बार-बार it goes to the point where people say Sommer हिलता नहीं. That's goalkeeping. तुम फालतू का dive नहीं करते. Swilar had no chance to save that. But वो इतना easy था ना अजय भाई कि that finish was like एकदम मक्खन finish जो बोलते हैं. मतलब मोइसेकिन का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे अभी इस टाइम पे तो. और उसका उसने सेलिब्रेशन जो किया वो किया. Celebration man. Awful celebration. I think it's a bit weird, but ठीक है, उसकी मर्जी है. कौन होते हैं वाले. पर नहीं, look, जैसे चिंतन मैंने I have that goal, guys. I have that goal pulled up. If you want to show it though, because Serie A के YouTube channel पे होता है ना, so you might get a copy. नहीं, Twitter पे मैंने किया. Twitter पे किया. नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि because it's already on YouTube as a separate thing. We can try. Let's see if it happens. Is it visible though? Yeah, pass like from the mid. एक मिनट अब साउंड बंद कर दो. उस पे साउंड पहले बंद कर दिया. हाँ, दिख रहा है. हाकान, if you care about Ballon d'Or again, Hakan finished 20th 2-0. No, we are not able to see anything. कोई प्रेजेंट नहीं हुई. नहीं कुछ नहीं दिख रहा है. आप मैं तो चैट से लॉग्ड इन. if चिंतन भाई is logged in, maybe he can. अरे एक मिनट, sorry my bad. ये देखो प्रेजेंट ही नहीं किया था. प्रेजेंट ही नहीं किया था. वो साउंड बंद कर दो फिर से. हां बस he did this 1-2. He just the pass. Yeah, so this is the first goal. देख लो आप सब, ये देखो. Look at how easy it is. एक तो मोइसेकिन का कॉन्फिडेंस ही अलग है. Look at was he celebration मत दिखा. By the way, guys, ये just look at Mancini here, okay? Look at Mancini, how he dropped. And also look at Endika. This is Mancini. Bove का pass, वो Bove का pre-assist. Yeah, he's walking. And also look at Endika. He turned 360 while defending. Yeah. That is why he got slow. ये इधर pause कर दो अब. But look, that's where you क्या हो रहा है ना. We are looking at a Fiorentina side जो चिंतन और मैं डिस्कस कर रहे थे, जो improve हो रही है, जो कॉन्फिडेंस में बढ़ रही है. They are coming against a Roma team that's a full mess, जो पूरा सीजन mess रह चुकी है. And you saw that confidence. आप बोवे में ही देखो, वो pre assist, sorry, it was not a pre assist but pre assist for these days terminologies. आपने देखा बोवे का वो पास था, फिर उधर से बितुल, you said how head on they attacked, and all this ये सब बिना गुडमंसन के हो रहा है. By the way, let me tell you, Goodmanson is injured again. So look, first goal तो वो था, we dissected, but yeah, Roma from the start, as Chintan bhai said, both of us were watching. To me, they were always the second best. ठीक है, चलो एक maybe
10-15 मिनट का फेस था where they looked good, maybe after Manu कोने को जो उसने अर्ली सब किया, because कोने ने अच्छा मारा वो देखेंगे, but I think that's apart from that फियोरेंटीना जो स्कोर लाइन है वो रिफ्लेक्ट करता है उनकी डोमिनेंस को. I'll be very honest with you. They could have But yeah, scored we more. can, उतने chance बना रहे थे. They were like, it was completely, apart. Like उनका defense ऐसा लग रहा था कि है ही नहीं. Every Ajay, single winger was going in. Ajay, if you watch the full game, I'm sure you're not going to watch it, but Kone Yeah. probably is your only bright spot. And what I didn't like was Dybala भी ना एक time के बाद frustrated होके was taking too many shots. He knows there's a lot of traffic in front of him. काफी सारे मतलब he just wanted to curl it in. He was missing that pass. But probably Ajay वो frustration हो सकता है because already 3-1 हो चुका था. Midway first half में 3-1 हो चुका था. And dominance था, so probably he wanted to make that one move, but probably Fiorentina also saw that they were closing him down. So एक all in all frustration दिख रहा था, Roma का, and Fiorentina took advantage. And I'm very happy you did not see the game because Bove was everywhere. Yeah. मैं देखूंगा, चिंतन मैं देखने वाला हूँ. I've kept it like, GXR में full replay आता है मैच का. मैंने वो bookmark करके रखा हुआ है. मैं एक ना एक दिन देखूंगा. I want to dissect this game. But आज ताकत नहीं है because you spoke about Bove. This is if you guys can see the screen. I want to just say one thing before you show the second goal. I guess that's what you're about to do. एक चीज बोला था, what I like Palladino के end से, because अगर हम ये गेम डिस्कस करें तो थोड़ा फ्योरेंटीना एक सेटअप वो बदल रहा है. मतलब what I'm seeing is he knows his wide players are really not that good out wide. वो मतलब एवरेज क्वालिटी है, तो उनको रिवर्क करके ना बीच में क्लॉग इन करता है so that they can at least do the bare minimum of linking up. इकोने not the greatest player, पर उसको तुम बीच में डालो. मिडफील्ड ठीक है, बोवे, कटाल्डी is in form, ये सब लोग अच्छा करे, and that's what's giving confidence. Beltran, Lucas Beltran पे कितना hype था when he came to Serie A, but he doesn't barely scores any goals. He plays him as a number 10. Andrea Colpani is benefiting because of that. So you have to give the guy very credit. और एक प्लेयर बोलना चाहता हूँ चिंतन में, वो पिएत्रो कोमुज्जो करके उनका सेंटर बैक है ना, बहुत यंग टैलेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. He got injured yesterday, but बहुत अच्छा डिफेंडिंग कर रहा है. So Fiorentina, I think Chintan will agree, they looked generally a bit भाई more. आडली को देख के तो दुखी हो रहा है because इतना अच्छा डीप में बैठता है, he's so calm. वो बैक पास कर, he'll hold the ball, he'll suck the players in, and वो कल बहुत अच्छा कर रहा था. जैसे you कटाल्डी, आडली, कोलपानी, ये लोग सब ब्लॉसम दिख रहे हैं. This looks very promising for them. But he was very mature yesterday. Very mature performance by Adli. Yeah. Swarnim is just said he got to go. We'll catch up next time. Sure. So, nice to have you, Swarnim. Happy for Keen, he said. Yeah, happy for Keen. So, second one, comments. We will take all the comments one by one. Yeah. For sure, because वो तो बनता ही है. But this is Bove's goal. I think this is Bove's goal. Just look at it, man. He just walks past every. पर मेरे को सोचिए ये टाइम पे लगा कुछ फाउल है क्या, मतलब वाई पे कुछ विसिल मारा क्या रेफरी? ये पूरा देखो. हां ये देखो सब स्टैग्नेट क्यों हो गए हैं? look at that how look at अजय, this is what ये होता है वो कैजुअल, पर यू ब्लो विसिल, सब लोग रुक जाते हैं कि कुछ हो रहा है. भाई हाउ आई वाज सो शॉक्ड. आई वाज लाइक कुछ फाउल है क्या? मितुल, आई वाज सो स्टन्ड that ऐसा इस संडे लीग में ऐसा. मितुल, यू आर अ प्रोफेशनल प्लेयर, तू खेलता है यार, तू ऐसा देखेगा, तू एज अ कैप्टन इफ यू सी दिस, तू चालू मैच में इन लोगों को निकाल देगा. Exactly. I would have screamed like I've done this once in my team. एक player ऐसे खड़ा हो गया था and he was laughing after that. I screamed to coach, get him off right now, or I will not let him play. And then they did it. Because both when you are in the zone, right, you're serious, and someone do this, you feel very bad. But this is absolute joke, yaar. I'm getting second-hand embarrassment. Like me and Chintan, we both got, even we're not the fans of Roma, but हमें second-hand embarrassment हो रहा है देख के कि as if it's our team doing it. So this goal reminded me of Barella's goal at Napoli when we beat them 3-0 in Naples. वो जो 3 डिफेंडर को काट के मारा था उसके बॉक्स के अंदर. हाँ, वही वाइब्स दे रहा है मुझे, because Roma डिफेंस को तो ले लिया यार बोवे ने. बट थर्ड गोल अजय भाई, अजय भाई is not saying anything because वो देख के अजय को PTSD आ रहा है. देख मैंने क्या मीम डाला था, बोवे एंड कटाल्डी मास्टर क्लास. अब ठीक है कटाल्डी का नहीं, बट बोवे तो मास्टर क्लास पता ही था. पलाडी ये तो स्पेस है. व्हाट इज द स्पेस? पहले मुझे वो समझाओ.
एक तो वन थिंग आई वांट टू से बाय द वे बिफोर एनीवन स्टार्ट्स थिंकिंग कि फ्योरेंटीना के फैंस क्यों नहीं स्टेडियम में, उनका स्टेडियम का रेनोवेशन चल रहा है, नया स्टेडियम बन रहा है, इसलिए वो सब खुला नहीं है उधर बैठने के लिए. विदाउट ऑल दैट चिंतन भाई, दे आर गोइंग टू हैव दिस सिचुएशन फॉर इयर्स टू कम, at least 2-3, and with that they're putting all these performances. Just look at number 5 Endika, man. What he did there. That That वो was अगर आप फिर से so अगर आप horrible. गोल If you see the side angle, उस एंगल में वो Exactly. खड़ा था. He didn't even charge. This is such a basic mistake. या अगर आप गोल दिखाते रहना चाहते हो, मतलब थर्ड वाला तो सॉरी दैट वाज थर्ड वन राइट, या थर्ड वन. नहीं मेरे को अभी मैं सिर्फ एक लास्ट वो मैच का एक्शन का वो दिखाऊंगा. बाकी भी दिखाई दो इसी नोट पे. 6 के 6 गोल दिखाई दो. अभी 3 आधा कर दिए तो पूरा ही कर दो, मतलब ऑडियंस के लिए. Yeah, that was a good goal. Was this a penalty? In my opinion, it's very 50-50 because Chelik does देखो get a bit of the ball. आप जूम इन करो क्योंकि there is a clip over there, I feel. In my opinion, it was. Yeah, it was a clip. क्योंकि वो बेल क्लिप है. this is that kind of a penalty. जब स्लो मो में देखें तो ही गिरेगा, बट यार अजय अपना थोड़ा थिंकिंग अलग हो जाता है बिकॉज हम लोग गेम को कंटिन्यू करते हैं, बट इफ यू स्टॉप द गेम दिस इज अ पेनल्टी. I'll tell you why. I'll tell you where this goes against him. अगर आप वो फिर से दिखा वो क्लिप, वो पोलिटानो वाला क्लिप मुझे याद दिला रहे जो हम नापोली का सॉफ्ट पेनल्टी बोल रहे थे ना 2 हफ्ते पहले, वन वीक अगो. पर द फॉलो थ्रू does damage because I know follow through होने वाला he can't do, but then Bove leaps into that follow through and that just makes it worse. So first of all, I don't understand this concept of a follow through penalty. How do you Ajay you are the only one probably understand ये follow through में penalty कैसे होता है. I don't understand this. It is out of my hand. A follow through leg में जैसे अपने मिलान का रेड कार्ड के बारे में बात किया था. आपकी दूसरी लात हटा दो उस टाइम के लिए, like you are expected कि आपकी लात गायब कर दो वहां से कि there is no momentum shift, कोई वेट नहीं जाएगा, आप टच नहीं कर सकते. This stupidity. Yeah, because अजय जैसे हमने बात किया था क्लब ब्रूगे वर्सेस मिलान में वो रेड कार्ड, ये how are you going to stop that? तू कैसे करे? तू मिड एंड में रुक जाएगा क्या? ये शाओलिन सॉकर चालू है क्या? So I never understood this, and slow mo में सब penalty लगता है. So as you said अजय, very soft is an understatement. लेकिन अभी सब slow में हो गया है. अजय, we can discuss the United the penalty मिला था. If you start giving that penalty जो United game में हुआ against West Ham, I have no faith left in football anymore. Definitely, that was very controversial, very stupid penalty, but yeah. ये एक इंटरेस्टिंग कमेंट्स अगर आपको लेने हैं बिकॉज़ थोड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स आ रहे हैं. Also इस गेम में एक one more thing थी, वो डिबाला free kick that De Gea saved, if you guys know. Yeah, that's a good one. That was a good save. David De Gea turned up big time for Fiorentina. De Gea is turning up well for them, yeah. अजय दिखा देना, फोर्थ गोल भी दिखा दे अबे वो बोवे का. अभी दिखा दो, मैं वही बोल रहा हूं, अभी इतना कर दिया तो सभी. मैं तो YouTube भी पुल अप करता हूं, बट लेट्स टेक सम कमेंट्स इन द YouTube तो रिस्की हो जाएगा. अजय भाई स्ट्रेट अवे आओ. ईटी अच्छा. देख, ETH couldn't beat Paulo Fonseca's Roma, so I would have rather Fonseca. I think Ravi only said on the Calcio Church stream or someone else ki Man United is a mess, but then Roma is also a chaotic club similarly. So it's not like वो उधर जाके एकदम से. I'm not saying he's a shit coach. I do know he has some strengths and थोड़े flaws है, but it's not like magically Roma में is going to become perfect because Roma is a chaotic club in itself. तू जो देखा अभी इधर राहुल बड़े ने फॉर एग्जांपल बोला Roma has better players than UA, which I don't agree with by the way, with all due respect. पर रोमा ने जो टीम बिल्डअप की ऑन पेपर none of us thought this would be this kind of a season. So Roma is a very chaotic club. So I don't know, Ten Hag is the man for them. I'll be really honest with you. Yeah. Okay, if Ajay Bai doesn't come in the next 10 seconds, Lazio will beat Roma in the Europa League final. भाई पहले वहाँ पे नेक्स्ट पे एक मैच तो जीतने दो. Pedro winner and dressing up as ये तो कैल्शियो चर्चा पे आने के अलावा अजय भाई की स्ट्रीम पे ही आ रहा है आजकल, मतलब I'm telling you he's got other identities. स्पीलर ने थोड़ी एम्बैरेसमेंट बचा ली. हाँ, he was making sense. Bove welcome to Inter. No, इसको बोल रहा था like you know the Roma regret. ये एक मीम बनाता हूँ कि you know sell academy product becomes good.
ends up playing for look if he's technically and if he's better than if he turns out to be better than Fratesi तो कर दो भाई future में देख yes, लेंगे. Bove is much more better. He can complete passes for sure. Yeah, Yeah. no way मितुल wore purple in the stream. हाँ वही हम लोग बोल रहे थे. हाँ ये अरुण का next comment तो I Yes, think Bove's agent agent, yeah, commented. क्या आप story बता दो, आप ही बता दो. Yes. So basically, now we know it was basically Lina Suluku who wanted to sell Bove. तो ये basically just इसमें एक technicality है कि Serie A clubs need to show a plus valenza how they say. Yeah. मतलब youth Yeah. product को आप बेचो तो 100% profit दिखाया जाता है. Capital gains. Capital gains. So ये 10 million, whatever 10.5 million, 10.6 million is a pure profit in the books, which is why Roma have to sell. So everyone was like, was it De Rossi who pushed Bove out? But now we know with the agent, we can confirm that it was Suluku who wanted Bove out of the club. I thought he was also- on loan. He's outrightly sold. Right? Sold. Loan with an obligation to buy, हाँ, मतलब which will be ले paid with लेंगे वो, some. ले लेंगे. Obligation is over. But that's the हाँ, thing, वो हो जाएगा. they उसका एजेंट वही कमेंट किया ना चिंतन में अड्रेलिना मतलब अंडर द पोस्ट अंडर बोवेस पोस्ट to troll her, I guess. So yeah. By the way, his debut was against Milan. I think he came on the pitch against Milan. Jose Mourinho got him against Milan. Came on in the halftime. सब की तरह आया था. And Yeah. सबको लग रहा Very था well. he was a prince. मतलब बोल सकते हैं Pellegrini has not lived up to the tagline of the Prince of Yeah, Rome now. he's सबको लगा बोवे होगा. So and by the way, from the looks of it, जैसे सैंड्रो टोनाली था when he went to Newcastle, glove face. बोवे का भी जो वीडियो आए थे, he was कितना उदास सा लग रहा है कि हाँ, संसार बहुत छोड़ उदास दिया था, उसने, बहुत ऐसा उदास लग रहा था. बहुत उदास था. ये मित्तुल पर्पल परम भाई पिंक यू पीपल देख मैं स्टार्टिंग से पहन रहा था मित्तुल बदल के है मुझे मत बोल मैं स्टार्टिंग से ही पलेर्मो का पहन रहा था वाइक सा इज एन इंटरिस्टा नाइस टू हैव यू यार छोड़ दे देख अगेन आई फील ही डिजर्व्स टू बी हायर बट देन दैट्स अ होल डिफरेंट कन्वर्सेशन वाइक्स लेट्स टॉक अबाउट फियोरेंटीना रोमा बैलेंडर भूल जाओ मतलब let's not talk about it Chintan bhai in blue because he's not in a position यार भाई वो इसके ट्रोलिंग मतलब अलग गेम है इसको this is my trauma game of the season. क्या यार वो गेम तो ऐसा लग रहा है हम लोग Yeah, जीतना man. चाहिए था वो गेम कैसे हार गए हम लोगों के. Yeah, that is what I was about to say. Yeah, Fiorentina. This was Mitul, this was Theo Hernandez's birthday gift to Fiorentina. yeah Exactly. Penalty drama. oh yeah this is a good Defeated both of like Milan and Roma as well. And in both the games, you see a defensive disaster class by the teams, right? कि दोनों Yeah, टीम में yeah. कुछ ऐसा हुआ कि there was a मिलान tender गेम में moment. तो मिलान गेम में तो टोमोरी बर्थडे गिफ्ट और डिजास्टर क्लास था वो तो दो अलग ही सबको Yeah. पेनल्टी दो. सबको दे दो. हेडर क्लियर करने से ज्यादा उसने बॉल कैच करने में जल्दी That was, दिखाई I think Ajay, that has to be the Can't funniest get thing. over that. You pulling out the Funniest. ball from Pulisic's hand to giving it to your friend. ऐसा तो हम लोग खेलते ना क्रिकेट जब भी अजय तू पर- बैट बच्चे, लेके आया Yeah. तू बैट उठा के इसको तू जा नहीं मैं या तू हाँ. जाए बैटिंग करने को वैसा हो गया ये तो. बैट मेरा है. बैट मेरा है. back में the funniest thing was how he actually jumped for the ball faster and more accurately than for that header on the second That ball. header. वो बड़ा funny लगा मुझे. वाह वो साले I'm telling you, just check the Fiorentina ground. कुछ तो है यार, कुछ तो होता है opposition teams को आ जाके. पता नहीं ब्रेन क्या फार्ट्स होता है. होते हैं ब्रेन खाली स्टेडियम में अजय भाई आधा साइड खाली है मैं वही रेनोवेशन बोल रहा हूँ ना, के मतलब क्या चल क्या Construction चल रहा रहा है. है. वही सब लोग बोलते हैं ना आशा का ब्लैक मैजिक बोलते हैं मेरे को लग रहा है अपना कमिश्यो कर रहा है Purple ब्लैक मैजिक. and this is funny Purple Purple magic. magic. this is purple this is funny because Fiorentina are fourth in the table जो it's again very early and all but still Fiorentina are fourth which is quite funny to see because ये कभी होता नहीं है इतना Chintan Yeah. has turned to the blue side of Milan hence proved Corbetta Mayor IDL ऐसे ही बदनाम है हाँ मैं ही मोराटा को मैसेज कर रहा था. यार देख मैं अपडेट्स के हिसाब से बोला ब्रो नथिंग लाइक दैट अजय भाई व्हाई डू यू वांट टू गिव योरसेल्फ मोर पेन बाय वाचिंग फुल गेम अगेन आर यू स्टॉकहोम सिंड्रोम भाई क्या बोले यार, स्टॉकहोम सिंड्रोम भी बोल सकते हो. 20 साल से ऊपर हो गया तो आई थिंक वही. दैट्स एप्ट टू से. वही वो ये- जेम्स फ्रैंको का मीम है ना अजय वो जेम्स फ्रैंको का मीम है ना फर्स्ट टाइम फॉर यू ऐसा कुछ इसका मीम है ना ऐसा है तेरे लिए. Yeah, that's true. That's true. आदित्य says बैलेंडोर कौन जीता देख क्रिस्टांटे जीतने वाला आई थिंक दैट्स माय प्रेडिक्शन सर ब्रायन
Third Cristante. Brian Cristante, king of They've not changed London. they've changed the criteria to the number of fouls committed and the lack of passes completed. तो अभी तो क्रिस्टेंटे ही जीतेगा. तो क्रिस्टेंटे फ्रेंडली जीतना चाहिए. the way Cristante takes the cake, right? I mean, वो तो अलग ही level पे भाई. Ajay bhai, you will get your revenge. Fiorentina will lose conference final against Chelsea. I This swear could if they possibly lose, happen. Yeah. वो This हो could happen. सकता है. Actually हो सकता है. Third time's a charm. Yeah. Lautaro deserves more than Rodri. हाँ, अभी देख वो again Atalanta's love. We are not getting too much into Ballon d'Or. We have our opinions, but Ballon d'Or again we are not really focusing on it. ये तो ले लिया था राहुल का कमेंट. I was told I'll not be made mod in CC, so I'm boycotting. भाई तू अगर boycott कर रहा है तो तेरे को मिलेगा ही कैसे? That's such a you're contradicting yourself, bro. नहीं यार अरुण को अवार्ड बनेगा ऐसा कैसा यार? We need him बना in the दे. awards. We'll make him. Hopefully he doesn't misuse it. I found that हाँ, De Gea save, by the way. De Gea Oh, save. De Gea was Yeah. fantastic again. But De Gea is रीबॉर्न Turned up. यार respawn हो गया पूरा. yeah, वही. Yeah, but that was a good free kick and good save also. It hit the post also, if I'm not wrong. Oh, Good save. he is See fantastic. the other angle वो दिखाएंगे शायद. He hit the post. I Oh, think. that's a good game. Yeah, see this angle. We'll have to start doing this on our main channel. Show these clips. आप ये सेरिया के clips दिखा रहे हो? कहाँ से निकाल रहे हो? ये तो हाँ ये सेरिया का ही है. Fiorentina. अच्छा ये अपने को Official, I think once official हो जाता है तो अबे एक है ये कहाँ से कौन से मीम्स आ रहे हैं भाई ये? ओए मोरिनियो. ये बहुत फनी है. और चेस्ट पे रोमा है वुल्वरिन के. सही है. उनको follow में Torino and Atlanta pages you are getting. Atalanta, Torino, all of them above Roma. वही सजेशन में आ रहे हैं अजय भाई के. Follow everyone above. देखना but I don't know. हाँ बोल कंटिन्यू नहीं मैं बीच में देखा कमेंट्री भी ट्रेंड हो रहा था. वो पता नहीं क्या था. Why was commentary trending? But nevertheless. We'll check. अजय यार क्या लग रहा है यार अभी ऑन अ सीरियस नोट कुछ तेरे को लाइट दिख रहा है एंड ऑफ द टनल में? मतलब आई एम नॉट सेइंग मिलान है इन अ सिमिलर कंडीशन बट आफ्टर सीइंग रोमा आई एम वेरी हैप्पी एट वेयर मिलान आर राइट नाउ एटलीस्ट. मतलब तो वेयर डू सी योरसेल्फ? मतलब एज यू सेड सीजन तो राइट ऑफ करना ही पड़ेगा. यू विल बी वेरी हैप्पी probably if you finish in the European spot. I think now with Fiorentina doing so well, Lazio doing so well, so क्या लग रहा है यार? मतलब what and are you sure like as in लगता है कि you might say Juric go also? एक possibility. लगता नहीं कि I'm sure he's going to go. Juric is going to go. Now the only thing is कि which direction will the management go for? Will they get De Rossi back because De Rossi is anyways under contract? So will they go that way or will they go and hire a new coach in the middle of the season? Will they go that way? बस यही दो option है. I think the coach who might consider this project, अगर आप realistically अगर आप देखोगे, is Maurizio Sarri. But Maurizio Sarri is going to probably inherit this mess. This is just the way that the way that I see things working. I know कि a lot of newspapers were reporting कि De Rossi coach, Ranieri technical director वो सब, but I think that's all just fantasy. I don't think so उसमें कोई सच्चाई है. But yes, I know for a fact that they are in touch with De Rossi. They probably want him back. But Juric is going to stay at least in the Torino game. पर ये थोड़ा मैस नहीं हो जाएगा? मतलब सर्कस नहीं हो जाएगा if De Rossi back? Such a bad rep for Roma, Mitul. मतलब रोमा का कितना लगेगा? मतलब this is called global humiliation. Negative PR या negative marketing हो गई. PR तो बहुत छोटा टर्म बोला. मैं तो humiliation बोल रहा हूँ. This is a global humiliation. In fact, if you remember Zamparini, ironically, Param is wearing a Palermo. Zamparini करता था ये यार. Zamparini, yeah, this was before Zamparini. जब बढ़िया है Zamparini. Zamparini क्या करता था? एक कोच को लेता था फिर फायर करता था. Goodillo and Francesco Goodillo. मतलब he was always on the payroll. I feel उस पे तो एक अलग वीडियो बनाने पड़े. पर वही वाइब्स और एक और चीज है ना. Again, I will stick by this.
I will agree कि De Rossi को harshly sack किया, जल्दी किया, but I still feel Juric is a way better coach. Look, my argument today when I was having a discussion with Ajay Bhai on Twitter was Juric gave us two season best defenders of the season in the Serie A in a row. Yeah. Buongiorno Bremer. Well, he's a class coach, but उसको तुम ये मैच में डालोगे वो क्या करने वाला? He can only do so much. He's been thrown in. वो क्या करेगा? He accepted. Parag, the बात एकदम perfect. You're right. But do you think at this point of time Roma might need a manager who's more of a strict figure? ये management चाहिए अभी, like Pioli types. I'm just giving an example. Because अभी coaching system तो out of the window है भाई. पहले तो ये mess को बढ़ाओ. Sometimes some players are bigger than the manager. Like Dybala किधर है? He's in a bigger team as Ajay बोला. No disrespect to Hellas and Torino. Roma is a bigger jump. So at this point of time, you as Sari होगा, अबे किसी को हिम्मत नहीं होगी सारी को कुछ बोलने में. I'm just saying, just putting it out there. Yeah, look, I agree with you, but then there's that one thing also ना कि Juric actually अच्छा deep read strong man manager भी. I get it. He's not the most reputed, maybe that's obviously वो एक अलग issue है. But I feel अगर ये change करते रहोगे तो it's not like कि change करते करते क्या comment देख लिया आपने? I guess you Arun. यही कर दो आप. बेस्ट ऑप्शन. ईगर्स टीम मैच. मंचिनी इज फ्री. कल्याण चौबे को सीईओ बना दो रोमा का. कल्याण चौबे को यूजेबियो दी फ्रांचेस्को जब सैक होगा उसको भी ला सकते हो आप लोग वापस. वो भी डेविड मॉइस भी बोल रहे हैं. ऑप्शंस तो बहुत है भाई. मतलब to be honest, I won't put it past Roma if they signed Mancini. मैं लिख के देता हूँ. They are that incompetent, I feel. I won't put it. That is a disaster class in PR. Laziale through and through. Sari तो चल ठीक है. मतलब Sari is a Tuscan banker, has got history with Empoli, Napoli. Fair enough. But signing Roberto Mancini would be like the PR disaster class like never before. Look, Allegri, the thing is, Allegri अगर कोई बोलेगा ना, I don't know, like man management wise शायद कुछ करते जैसे चिंतन भाई ने बोला, he might grind out, but again, in 2024, I don't think Max Allegri is the way to go. एक तो wages बहुत भारी पड़ेंगे ऊपर से. wages बहुत high है. अगर मिलान के लिए कोई बोलता, I am very happy with ऐसा सब देखने रोमा के देखने में. I am so happy that Milan is still sticking with Fonseca. Not that Milan are playing badly also. Milan are still sticking with him. He has his principles. But मेरे को भी ऐसा लग रहा है. I just feel I also love Juric. I love what he's done to Torino, especially Hellas के साथ जो उसने किया था दो. So amazing. But मेरे को लग रहा है sometimes some managers might just be good, but they fall short of the stature of the club. Yeah, I get it. वो मेरे को लग रहा है इधर एक Allegri का एक strict principle जैसा आया. Like what Pioli did for Milan. Everyone knows Pioli is not a great manager, यार. But Pioli is such a great man manager. So एक board हाँ De Rossi again is a great option. वो legend है. No one is going to really argue with De Rossi. But tactically, but then वही होता है ना चिंतन भाई, वो मांचिनी के रेल में गिर जाता है. I would say even the thing with De Rossi उसको he has a lot of learning to do, and he's not, I felt, इस पाल के बाद सीधा रोमा, that's not a proper path. It's not the way to go. No, at last I think अभी De Rossi का क्या होता कभी with Gattuso this happens, and I'm putting him in the same breath as Gattuso because these guys don't think from their head only. इधर से भी थोड़े वो लोग करते हैं. So I feel Ajay, he's too involved with Roma. He's too much in love with Roma to manage them with his head in a sticky situation because. And he's that kind of a guy. यार वो इटली में बोल दिया उसको यार मेरे को क्यों भेज रहे हो, इंसिने को भेजो. ऐसा अगर कुछ इन्वॉल्व आदमी होता है ना, too much for him. I think Gattuso is the same example because ये लोग इधर से नहीं सोच सकते. मतलब when it comes to their love, I think Gattuso is just a very random coach. I feel he just does what he wants at the end of the day. He's just too random in general. And Ravi ka comment is quite. This is interesting. Southgate to Roma. मतलब ये देख के तो मुझे I would love to. He's not bad. Like I know he's no chance happening. I know no chance, but I know he's more of a knockout manager as well. But Chintan भाई क्या लगता है? Because I think he's not that bad in general. No, he's not. I think उसको बेचारे को तो बहुत स्टिक मिला. हम लोग सब बोल रहे इंग्लैंड का बैक टू बैक फाइनल्स में लेंगे. It's not a joke. Semi-finals, finals. बाकी कोई मैनेजर ये करता कोई दूसरे नेशनल टीम में, he would be hailed as one of the best managers. और अच्छा है, whatever it is. So not a bad manager, but I think they'll go the Italian way. मेरे को ऐसा लग रहा है. And अगर Southgate, if you are saying Southgate, then I would say why not Allegri. मेरे लिए तो वही होगा. If you are talking Southgate, then why not Allegri? That's and Allegri को भी यार
थोड़ा ज्यादा स्टिक मिला था, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ हिज स्टेंट विद यूवेंटस भाई, लेकिन वो अभी अजय बोलेगा आई डोंट केयर अबाउट द गेम प्ले, मेरे को 1-0 विक्ट्री चाहिए, 1-0 टू द रोमा, ऐसा लाइक आई डोंट, यू डोंट केयर, you would die But for then, an Allegri right now, but एक दो सीजन Dybala करने के बाद right back. that's the thing. I think with Allegri more than all that, ना मितुल वो तो रहेगा ही, पर कैसा है ना, वेजेस उड़ाएंगे तो उसको तुमको एक लंबा सेट कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा. He is not going to Yeah. accept anything short term, and then they are stuck with him Correct. when he starts doing badly and he plays his outdated game or whatever. Then you have to give him the pay him Exactly. out. Exactly. So Yeah. इसीलिए 5 years लेगा वो, 4 to 5 years का contract he'll get for sure. yeah, he's not going to. सबसे सस्ता ट्यूडोर और सारी लग रहा है मुझे अभी, तो ऐसा लग रहा है ट्यूडोर भी है. इसका नाम सारी एंड टूडोर ना, मेरा recommendation है more for Bologna, which I think because they wanted Bologna, Tudor और सारी in the beginning. सारी should have been to Bologna सबसे पहले. They signed this. ये चेन मजा होना चाहिए. Italiano gets sacked, they sign Sarri, Juric gets sacked, Italiano goes to Roma. जो मजा I would. मैं तो You will get a new PR boost. Traction boost, PR boost. मैं जोकर 3 मैं बनाऊंगा, मेरे ऊपर रहेगा वो जोकर 3. यार बट यार अभी जो मिहिर का कमेंट है एलेग्री टू मैन यूनाइटेड, यार यू नो एक्चुअली ये बुरा नहीं हो, आई डोंट नो व्हाई ही विल पुट द टीम इन लाइन. आई फील एलेग्री एट यूनाइटेड नाउ वुड बी सबको सीधा कर देगा, बिकॉज़ एलेग्री मेरे को लग रहा है. यू वोंट बिलीव, अभी मैं हमारी स्ट्रीम थी ऑफसाइड डेक्स की, दैट वाज अबाउट ईटीएच सैकिंग राइट, तो वहां पे सब बता रहे थे, तो आई सेड देम कि वन गाय देयर यू आर मिसिंग, क्योंकि सब वायबल ऑप्शंस बता रहे थे. ऑफ कोर्स जिदान इज नॉट कमिंग, टूकल चला गया है इंग्लैंड, नगल्समैन छोड़ के नहीं आएगा, पोचेटिनो इज वन ऑफ द रीजन, बट वो यूएसए में है, क्यों छोड़ेगा, तो स्टिल नहीं यूएस का बोल चांस शॉट आउट. और is it fine now? So I was saying Allegri is a good shout क्योंकि वो काफी सही है. He will get the defensive also, और पूरी टीम में ऐसा नहीं कि you need some ruthless decisions now, someone who can you know like sit you and make you play, क्योंकि सब अपनी अपनी कुछ करते हैं, तो वो that is something जो ड्रेसिंग रूम में कुछ एक dominance ला पाए. So I think Allegri is a great fit for. By the way, I have a lot of respect for Allegri. I know उसको बहुत memes बने बहुत, but कभी-कभी you need that strict principal type of a manager, especially this you know something like this. I would be हाँ चिदन में सॉरी टू कट यू, आप स्ट्रिक्ट बोले और तभी रवि बोलते हैं रूडी गार्सिया टू रोमा, इसलिए मैं हंसा बिकॉज़ उसने बैक टू रोमा मतलब या बिकॉज़ उसने जो नापोली में किया भाई. बाय द वे isn't it Rudy Garcia only जो 10 wins in a row लेके आया था, first team to win first 10 games of the season. So I think it's still a record. I think no one has broken that, first team to win first 10 games of Serie A. उसका हो गया भाई. उसके बाद क्या हुआ अजय बोलेगा, मेरे को जानना नहीं. उसके बाद जो नोज डाइव किया रोमा ने उसके बाद वो सीजन नेपल्स में, उसका तो फर्स्ट रिपोर्ट व्हिच आई रेड अबाउट हिम वाज द मोस्ट हिलेरियस कि वो अपना पर्सनल काम वाज प्रायोरिटाइजिंग और नापोलीज ट्रेनिंग सेशंस. अगर ये कोच रोमा में आ गया, ये वर्जन ऑफ रूडी गार्सिया, he was refusing to speak in Italian, he was forcing French on the players, और उसका अपने तो टच लाइन पे तो प्लेयर्स के साथ तो झगड़े देखे ही थे नेपल्स में. तो भाई ये वर्जन ऑफ रूडी गार्सिया would be something. Man, Mir's comment, I think it makes sense. ये funny है. Seeing Fredkin's situation, I feel I'm too hard. Of course, man, I'm telling you, after seeing Milan, हम लोग अजय और मैं स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे, मिलान और रोमा काफी पैरेलल चल रहा है, लेकिन अभी मिलान तो उधर ही अटका हुआ है, रोमा गिर गई है. नॉर्दर्न मिलान इज इम्प्रूव, रोमा गिर गई है नीचे, ऐसा लग रहा है. सो आई एम वेरी वो लिंक खोल लो अजय भाई, वो लिंक खोल लो अजय. लोड हो रहा है, बहुत सारे विंडोज. टॉटी को मस्त समथिंग टॉटी रिलेटेड, बट यार वही है, मतलब चिंतन मैंने बराबर बोला, जब आप आपके क्लब को देखते हो, देन यू सी रोमा, देन एक्चुअली क्या हो गया ना, दिस आई एम सेइंग वेरी ऑब्जेक्टिवली, रोमा अमंग द सेवन सिस्टर्स और व्हाटएवर यू से हैज नाउ बिकम द लाफिंग स्टॉक एट दिस मोमेंट. लाजियो भी हंस रहा है, सब लोग हंस रहे हैं रोमा पे. आई एम सेइंग दिस वेरी ऑब्जेक्टिवली एंड नॉट इवन एज अ फनी थिंग. आई थिंक अजय भाई विल एग्री. लाजियो तो मजे कर रहे हैं. लाजियो जेनोआ में देखा, दे हैड अ इजी गेम, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं था. एटलांटा, आई मीन इफ यू technically consider Atalanta in the new Seven Sisters, I guess. But even if you take the traditional Napoli, everybody else is comfortable. Milan के ownership issues, जैसे चिंतन मैंने बोला, they don't feel big in terms of Roma. Inter Juve तो are in a position, I don't think where they'll be comparing themselves to Roma, with all due respect. But Lazio अगर आप पास में comparison में लाओ, जो for example मितुल, Lazio Lotito will be having a laugh right now. वो तो मजे कर रहा होगा साइड पे. Exactly.
सो रहा वो होगा. सो रहा होगा. He said it right. He does not sleep. He thinks. वो ऐसा He कुछ thinks, बोला, हाँ, कुछ वो बहुत बोला. वो कुछ अरे फनी उसका बोलता रहता है. उसका अपने डजोन इटालिया पे वीडियो देखा. He has a weird super, not a, he calls it a superstition, but वो हर रूम से निकलने से पहले लाइट बंद करता है हर एक रूम का. मतलब it's a superstition he says, which is very strange. मतलब भाई ये लोग है ना, जो इटालियन बुड्ढे लोग है ना, मतलब उनका थोड़ा लॉजिक समझ में नहीं आता है मेरे को. ये लोग थोड़े अजीब होते हैं. बिकॉज अपना भाई, सिल्वियो बर्लुस्कोनी इस बंगा भी सबको पता है कितना फेमस था भाई. वो भी किसी को वो समझ भाई, में वो नहीं बात ही आता मत था. करो. वो भाई, दैट विल तो गेट. बट अजय में वो लोड होगा तब आप दिखा लेना. अरुण कृष्णन का कमेंट वाज वेरी फनी. कार्लेस क्वाड्राट टू रोमा. भाई उसका तो, उसने तो ईस्ट बंगाल की तो मार ही दी. अभी दूसरी जियालो रोसी की मार देगा. एक जियालो रोसी को नहीं उड़ा दिया, दूसरे जियालो रोसी को भी उड़ा देगा. हाँ, ये he got tapiro doro. Totti got tapiro doro. Oh only, God, man. only in Italy, man. Only in Italy can this happen. So exactly, for those who don't know what And look at tapiro his doro face. is, हाँ, Look at his. but look at his face. वही. Totti gives Like, the no way. best Totti is a expression. Totti is a meme generating person. Like Yeah. कितना expression देता है भाई साहब. नहीं, so basically, for those who don't know what tapiro doro is, basically tapiro doro तब दिया जाता है from a different, it's not an official award, एक unofficial, I think कोई TV outlet देती है. Basically, when somebody has an extremely embarrassing moment over the course of months or weeks, in that month, every month they give out the tapiro doro. एक बार पापू गोमेस को दिया था, अगर आपको याद है, फॉर्मर एटलांटा प्लेयर, तो उसने लेके ग्राउंड पे फेंक के स्मैश कर दिया. He was that angry. So you have to be sporty यार when it comes to all these things यार. Exactly. मजा आता है ये सब चीज देखने में यार. मुझे गौतम एक गंभीर टू मिनट के लिए, रोमा. मुझे ना, गौतम गंभीर अजय, गौतम गंभीर टू रोमा. क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी पूछा तो बोला रैशफोर्ड सीधा. वो बोलेगा, अभी बोलेगा ब्रायन क्रिस्टांटे. हाँ, मेसी रोनाल्डो ब्रायन क्रिस्टांटे. but एक मिनट के लिए ना, the way Totti is holding the phone ना, मुझे लग रहा होता फोटो ले रहा है ओढ़ की. चलो, I won something. Literally वैसा ही लग रहा है. But GGMU Vaibhav says we are on the same boat, basically challenging each other on the, I guess. But Roma has it worse, bro. Your club has trophies. रोमा, अजय भाई का उम्र हो गया ट्रॉफी रुक के भाई. मतलब कॉन्फ्रेंस लीग के अलावा, और वो दूसरा में भाई मिलान यूनाइटेड हैव मनी टू बाय प्लेयर्स. आप लोग पैसा उड़ा के. अनन्या पांडे और वो क्या है उसका बंदे का सिद्धार्थ चतुर्वेदी, वही मीम याद आता है यार. ये आप नेपोटिज्म और रियल स्ट्रगलर्स को आप कंपेयर कर रहे हो. मीर says CR7 और मेसी क्रिस्टांटे. हाँ, वही. पेरुजिनी, this is Palermo 90 to 93 third kit. So yeah, that is Perugia तो red है ना. Perugia is like maroonish red. Yeah. But अगर आप गूगल सर्च करोगे ना चिंतन में, पेरुजिया का फेमस हिदेतोशी नाकाटा का जर्सी, few websites have it because he was a big deal, right? So of course. Palota issues, Friedkins was bright light. This and move who no one in Roma expected, all went uphill. He's So pretty this much I agree dead. with. Yeah. This is where the Friedkins were absolutely spot on with the way that they managed. Everything was right. Tick, 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 tick. And then suddenly it went downhill. मतलब literally वो fall है ना from a cliff. That's Exactly. how he kind of. You know what? As much as I ना, for the panel I want to say this and audience, as much as I dislike Fabrizio, as much as what जो भी fraud है वो, उसने एक चीज ना, एक CBS Sports जो गोलाज़ो शो है ना, वो ऑनरी और वो with a different panel उसको guest invite किया था. And there, I think this was 2 years ago or something, उसने बोला था रोम में with both Roman clubs, not just Roma, communication is a big problem. और ये हम लोग नॉर्मल कम्युनिकेशन एक परिचितन में जो इंटरनल ट्रांसपेरेंसी होती है, जो एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंसी होती है, हायरार्की फॉलोइंग करना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रोमन क्लब्स में. दोनों लाजियो में तो देख ही चुके हैं. बिफोर दिस शिट वी आर सीइंग एट रोमा, वी हैव सीन दिस मूवी एट लाजियो एट एवरी टाइम. सो ये जो फ्रीडकिंस का जो सामुनली ने बोला, दिस आई वाज रिमाइंडेड बिकॉज अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा था. विनिंग द कॉन्फ्रेंस लीग इज नॉट इजी, इट्स अ ट्रॉफी आफ्टर ऑल. ऊपर से फिर ये रैंडमली, मतलब व्हेन यू साइन ला लीगा टॉप गोल स्कोरर, यू साइंड अ टैलेंट लाइक मनु कोने, यू साइंड साउद अब्दुल हमीद, यू साइंड exactly you're Enzola Faye, you're signing all these players
Or I remember all of us were so excited, paper पे कि सब यार इसका score तो set Yep. है. We know it takes time to settle, but all the external issues have dragged it down. So this is a big problem in Roman clubs. The communication is a big issue. Yeah, that's all I wanted to say. अरे बिग सैम को लेके आ जाए, बिग सैम इज नीडेड, बिग सैम का हराम बॉल नीडेड, वो लॉन्ग तोड़ देगा सबको. Big Over, Sam, over. Big Sam, Under Big over. Sam, Dobik Shomurodov up to 4-4-2. 4-4-2. 4-4-2. Cristante receiving the ball from the goalkeeper trying to ping the long ball. वो चलेगा. देख फेंडिंग वो एवर्टन तो ऑलरेडी लिंक में आ गया है. शॉन डाइक को लेके आया यार, मैजिक कर लेगा वो. रोमा इटली में मजा कर देगा वो. Chintan bhai, forget the tactics, Mitul. The funniest would be the training sessions. Allardyce in his Cockney accent, hey, ping the ball. I can't do it. I can't do the impression. Cristante को कुछ बोलेगा, hey, ping the ball, run faster. भाई वो Cockney accent में British accent. Dybala will make that look. वो याद है जो Dybala ने look किया था Kelly वाला look. Yeah. और सब खाना रोमा में फिश एंड चिप्स के साथ रिप्लेस हो जाएगा भाई. मजा आएगा. so many और आ जाए. या अगर रोमा के 1-2 लॉस और आ जाए तो 15-16 हो जाएंगे. एंड दैट इज द स्वीट स्पॉट ऑफ सैम एलरडाइस. वो तो पक्का क्या आ रहा है. दिस इज वेयर आई बिलोंग. मितुल, leaving the jokes aside, 15-16 अगर जाते, बेप्पे याकिनी with his cap saving Fiorentina from relegation. आपको याद है ना चिंतन उसे रोमा के साथ रोमा को बचाएगा कैप में. इस तरह जा रहा है, हमको लग रहा है कि डाविड निकोला का काम आएगा. जिस तरह से रोमा जा रहा है निकोला. पर निकोला बोलेगा मैं कैलियरी के साथ तो अभी जीतना चालू किया हूँ, मैं क्यों उसका रोमा को अकेले क्यों छोड़ूं भाई. एंड ऑफ द सीजन में. या but comments देखते हैं. we'll just take we have a new person. I have some memes. I will yeah, because I just said because शायद there is someone new in the chat. Yeah, exactly. I think you have come for the first time. Yeah, please subscribe कर लो. कैल्चियो चर्चा पे भी और ऑफसाइड टेक्स पे भी. नापोली जीत जाएगी क्या उनका? he was the best defender यार last season. हम लोग वही बोल रहे हैं ना. बहुत underrated. He didn't get the recognition. He is quite good. रवि says 50. मैं अभी memes pull out करने वाला हूँ and आप लोग तीनों को, all three of you and everyone in the comments will have to vote for the best meme and उसको मिलेगा Hilale Lazio award, very prestigious award. we should have had Anubhuti because she would have trolled Ajay non-stop throughout this stream. मतलब I'm glad she's not here tonight because you know generally we like to get one up over each other rival clubs का. So I'm sure right now she's enjoying Roma's downfall, but दुनिया गोल है, you know, it comes back. What goes around comes around. That is Ajay bhai's pain. That is your pain speaking. दुनिया गोल है वो सब अंदर के दर्द से आ रहा है. जेमन का नाम सुन के जेमन का नाम सुन के मेरे को गूज़बम्स आते हैं. रोमन फैंस को क्या होता है मेरे को पता नहीं है भाई. तू मेरे को बता, वो 60 साल की उम्र में 2 मालब्रो का सिगरेट फूंक जाता है यार. मतलब वो आदमी yeah, that is the coach you need ना. I mean हाँ, मतलब more chaos. निकाल दे. चलो मीम्स टाइम. चलो मीम्स दिखा रहा हूँ. थोड़े बहुत उसमें मेरे भी है. Just तो वो उसको डिस्क्वालीफाई करो. ये रोमा रिगोरे वाला क्या? कौन सा वाला? नहीं पहले let's start from the top. Felipe Caicedo. He has been he's been quite active recently भाई. काफी कमेंट डालता रहता है कि ये पेनल्टी कैसे है क्या है, तो कुछ ही कीप पोस्टिंग. So yeah, that's good. But I thought it was related because he made it now, na? So I thought it was related to something to do with Ten Hag is what I thought more than anything. Probably. Yeah, but वैसे timing तो है. Yeah, because why will he troll Roma? मतलब मितुल में वही सोचा, why will he troll Roma? I know maybe to celebrate the win, but I don't know if he has a reason to troll Roma. I think this is to do with ETH मुझे लग रहा है. I don't know. We could be wrong. Why he would troll ETH also? But anyway. Yeah, exactly. He could. Fair enough. By the way, guys, check this meme out. Okay, this is absolutely amazing. You see Sir Brian Cristante on an iPad Analysis. watching something. You know what he's watching? Easy 2 million views. Easy to amazing skills. What is this?
I think this I might think have already won. this Yeah, has to this be a might contender probably. for Hilale Lazio. I This think has this to is be a already the winner, but dekhte. yeah. This is Remember 20 years ago, Roma went through 4 managers, and before eventually feeling it exactly, कुछ नहीं बदला यार आज. I think Yeah, with this pressure. I still feel the Cristante one is better than this. आगे जाते हैं. वो तो पेन ये क्या है? अरे भाई वो ये मत दिखाओ, वो भाई ये Dark. मत दिखाओ, आपका चैनल चला जाएगा. या आदित्य, आई नो ही टैग्स ऑन गुड कमेंट्स, पर भाई वो दिखा. हाँ, ये तो क्लासिक मीम है ये. Yeah, दिस this is इज a अ classic one. Yeah. क्लासिक. ये भी क्लासिक है. Oh God. बेचारे की गलती भी नहीं है यार. Cute, yeah. Roma fans, see you next season. This is a good one, Aditya. I hope you're watching. This is good. This is really good. This is contending with Cristante one. ये मत दिखाओ, ये भी आपका, ये शायद चला जाएगा चैनल इसमें आपका. रोमा फैंस ये वो कमेंट है ये जो हाँ. ओवे के एजेंट ने डाला था. हाँ, Prithvi ये Shaw. यार Prithvi Shaw and Lorenzo Pellegrini are in the same boat right now. I think. Yeah. उनको Miss मिलाओ Sarah. एक बार कोई तो. नीचे और कुछ है क्या? नहीं तो आई थिंक मुझे बेस्ट दिखा, मैं रोमा फैन. यार ये Definitely fix your job. Oh, ये तो I saw this. भाई, don't show that again. I think this will hurt your channel. वो लेफ्ट वाला इमेज. ये अच्छा है. ये अच्छा है. ये अच्छा है. ये अच्छा है. Oh God. Oh, this is that one. This is that. I love this. इसका story ना, the story behind this actual meme is actually very funny. ये owner है of I think Toronto. Sorry, which club? I forgot the story. The story behind this meme is very funny. Sorrento. I know the story. Sorrento. कुछ तो हुआ था and he was unhappy with the referee's decision, so owner ये And- scooter लेके चल yeah. pitch पे. Yeah, I remember this. I remember this Sorrento. Because see, at the back also, I think somewhere it is mentioned. But yeah, they went to the pitch. But this is damn funny. This is damn Yeah. funny. This will only happen in Italy ना. चिंतन भाई के ओनर को डिसीजन पसंद नहीं है तो चलो स्कूटर चला देता हूँ पिच पे मैं. Yeah. But yeah, I think the Cristante one and the Serie B one was my favorite, but the Cristante one takes it. Cristante, bro. Cristante has to Cristante. be. मैं रोमा रिगोरे को बोल रहा हूँ कि भाई तेरे मीम को हिलाले लाजियो अवार्ड मिल रहा है. फर्स्ट प्रेस्टिजियस हिलाले लाजियो अवार्ड. Yeah, He's that was a good one. Oh. We need actually. This reminds me, we need these features for our for Calcio चर्चा. मतलब कुछ ना कुछ होते रहता है in the world of football. Lot of funny things happen. So ये तो करना पड़ेगा. परम वो डिस्कॉर्ड शुरू करेगा ना तो उसमें सारा करना पड़ेगा. अपन एक सेगमेंट पूरा कर लेंगे. I will need help. I will need मित्तुल का एक. We'll ask Yogesh and one more guy I have, of course, Milan fan. देख योगेश अभी एकदम सुकून में बैठा है, टॉप ऑफ द टेबल है. मतलब तुम लोग Give him work, यार. Give him work. Yeah. हाँ He will look at when playing football. सीरिया के मैचेस भी जीत रहे हैं वहाँ पे बैठ के बना लेंगे डिस्कॉर्ड सब. कि गोल तो पड़ता नहीं उनके अगेंस्ट. Samun says, I think we will climb to 6th. I mean, there's a long season. I do think Roma कर लेगा. Yeah, I don't see Fiorentina being 4th also. So वो भी है. It's a very long season here. But the only interesting thing I would say, Chindan bhai, ki इस season में unpredictability because of the scheduling changes a lot. So you never know. इसलिए Napoli is wilding. Napoli is having their. So Mir, to answer your question, he has time until the Torino game, depending on the results. Sky Sport Italia ने बोला है, so देखते हैं उसके बाद. Again, I think sacking him in any case would be very harsh. Of course, it's not like he's doing great, but I think it would be too harsh. But yeah. ये डेडलाइन ये मेरे को डेडलाइन समझ में ही नहीं आता है कि ये गेम तक उसको चांस मिलेगा. अब इमेजिन दे प्ले वेरी वेल एंड दे लूज देन. मिलान का तो यूज था, दे डोंट हैव टू बीट इंटर, दे हैव टू बीट इंटर हैंडसमली. अबे इंटर को हैंडसमली कौन हराता है यार? मतलब वैसे भी कभी हारती है हैंडसमली इंटर. सो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. व्हाट इफ Roma played very well against Torino, but it's a draw or a loss. What if they play amazing? So I don't understand these deadlines. So apparently, sorry, I just found some interesting piece of news. जो Red Bull Torino का जो takeover का news आ रहा है, Cairo obviously denied it, मतलब he's an ass. But apparently now to follow up, 3-4 financial sources are saying कि
meetings actually already happened between Red Bull and Torino. So Wow. interesting news. Team. So I hope the takeover happens. I just hope they don't make it Red Bull Torino. वो कर दिया ना मेरा दिमाग घूम जाएगा. क्या बोलते हो चिंतन में? वो Red Bull Torino. Toro Rosso. It is going to be Red Bull because उसको chain बना रहा है तो Red Bull और लोगो मत बदलो. Red Bull Torino भी कर दिया. लोगो मत बदलो भाई. वो लोगो क्लासिक I don't think that can. वो नहीं होगा. I don't think that can happen in Italy. Torino नहीं करने देगा. Torino is a very big club. They won't let you change the club. Yeah, I hope. No. Look, Red Bull are far from perfect owners. उनकी भी flaws है, but they're definitely they can do better than this asshole Cairo. मतलब. But Yeah, I agree. But Torino नहीं करने देगा. Like Torino won't let them change the logo rebranding and all. Like maybe Yeah. they get the investment and everything, but not RB Torino. ये सब नहीं हो पाएगा. I think that is. that would kill Torino's identity, man. I'm just reading. I found out Nagelsmann, Thomas Frank, and Amorim are all contenders to become MUFC manager United. Bhai, I think Thomas Frank. I would hate to see Amorim anywhere. So just again from a Serie A perspective, again if you care about the Ballon d'Or in general, Lukman has finished 14th. Could be higher. Could be way higher. Again, not a point of discussion, but should have been way higher in my opinion. Guys, what do you make of Mats Hummels? What a debut to have. Oh yes. I think he should get Hilal Lazio more than anything. Hilal Lazio. Yeah, based on yesterday, I mean, own goal. Hermoso or him should get. Look, I've always been critical of Hermoso. I don't like the player. I think he's very average. Hummels to Chintan bhai to has pade I remember. It was quite funny. But Hummels might finish top 10, top 20 on Ballon d'Or. 29. Oh, 29. No, he. I think 25 से 29 yes. नहीं वो और टॉपिक दोनों 29th फिनिश हुए. रोमा को एक ही साथ चिपका दिया वो लोग ने मतलब. So in short, before we proceed, we are talking about the 29th best player in the world right now. Yeah. Who had a debut to remember. He was finishing above, but कल की performance से उसको नीचे डाल दिया उन्होंने. Since from 19 to 29. I didn't understand this comment. Why do you hate Chintan bhai? Who hates Chintan bhai? No one. कौन बोल रहा है यार? ऐसा अरे GTA ये मुझे like I guess he's phrased it wrong or somebody said something about Chintan bhai. I don't know. But I just maybe you hate Cristante तो समझ आएगा कि why do you hate Cristante? Why does Cristante hate Chintan? I don't know. I think probably because I abuse him a lot. I mean why Chintan bhai hates Amorim. Almiron. I love Amorim, bro. I love Amorim. That's why I don't want him. I don't want Almiron कहाँ आएगा? Only Nuno Tavares. Yeah. Nuno Tavares. So I meant that it would be very disastrous for other fans. Like I always loved him. I always think he's a great future Milan manager बन सकता है. I always think he's a great manager once Simeone, whenever he ends up leaving, I think he's going to be a great replacement because he also I think plays back three. Will be back three, favors back three. So I always love him. So are three great contenders. This comment again can be Hilal Lazio type of contender. यार वो पान मसाला वाला जर्सी 5 गोल खाना must be the worst feeling of all time. Actually, मतलब एक तो जर्सी वो विमल वाला performance विमल I've never understood that ad. एक तो साला है मुंह की बात और करे सारा. I've never understood. Yeah, what is this? What is this? No, at least this is pointing at the eyes. They do this. I never understand this. मतलब ऊपर जाता है क्यों? भाई तुम लोग समझ नहीं रहे. पज्जिनी को डेडिकेशन दे रहे भाई. Celebration उसका. How do you forget his celebration यार? Oh yeah, look, sorry, Chintan bhai. On that note, look at this comment from Ravi. Sergio Conceição, I know he's a Laziale through and through. He's कब से फ्री भाई. मैं तो by the way जब we got Fonseca मेरे को लगा यही आएगा. Conceição ही आएगा. I don't know how we landed up with this guy, but great manager. Objectively, this will be a good appointment because he's a good coach. Yeah, he's a good coach. I'm pretty sure वो club up he's more in that modern day mode of Lazio था मैं ex-Inter. I mean because he's about to in a way sign for Milan ऐसा लग रहा था, but he's also an ex-Interista. But then I don't think he'll care much क्योंकि उसका career की भी बात है भाई. He needs to, and कैसा है ना with Conceição, I'll say one thing. He is amazing when the back when his back is against the wall. मतलब again as someone who follows Porto almost like my second team, भाई वो स्क्वाड से निचोड़ के जो बेंच से प्लेयर्स निकाल रहा था
when Porto was not rebuilding the squad by spending because of FFP. Bhai, it's unreal his man management. By the And way, you've seen that. when Milan played that first Champions League, when they come back, हाँ, where we played Liverpool and Porto. Porto was the toughest team we played that season. yeah, Yeah. and look, Porto, अरे हमको भी on route to the final वो ओनाना के डबल सेव की वजह से बच गए भाई, नहीं तो हम भी शायद बाहर हो जाते. शुभम से डिबाला शुड गो टू प्रीमियर लीग. अभी वो उसकी मर्जी है, वो उसको तो रहना है भाई, पर देखते कहाँ जाता है वो. एक मिनट मैं बढ़िया just नहीं एक सर्जियो कॉन्सेसाओ. if look, I एक तो I don't like to write Juric off so early, but if he gets sacked, right, then Sergio Conceição would not be a bad shout. Ravi, do you I have think any that's the hope? best out of all the options you have mentioned. Yeah. Sergio Conceição. Yeah, Ravi, like, I'll tell you one thing, Dick, I think he is talented, but obviously I expected more from him at Arsenal as well. I do think there is a combination of multiple factors. Yeah, I do think उधर एक player तो है, but it will need quite a lot of turning around, because in his return to Porto also he has not played as much and he has not been that great. So confidence का भी issue तो है बड़ा player Fabio Vieira में. Yeah, I want to take this comment from Samun Lee because you guys watched the game outright. What do you make of this? Yeah. मेरे को समझ में ही नहीं आया. I thought injury हुआ है कुछ, मतलब Yeah. Same. weird, Same. very weird. I For thought the he Brian injured हो गया. Cristante start yeah. किया तो समझ में नहीं आया मेरे को तो. हाँ, वो तो कभी भी. Look, I agree. This is a mistake on Juric's part. All I will say is I will not go as far as saying Juric has no tactics. Again, I will never agree with that opinion. As much as I call out his flaws, I will never berate him that much. But yes, that was a big mistake. मानू कोने को अगर 30 मिनट में लाना था तो तुम 30 मिनट पहले स्टार्ट ही करवा देते. As simple as Start करो यार. तुम्हारा देख आज के टाइम में Best he player is है. the only midfielder. How Yeah. do you not start? And was and exactly he should have started. And again, Chintan bhai brought this up. Where was Saud Abdul Hamid? Like, Oh like, God, I'm tired. ये- I've yeah, given I'm- up now. एग्जैक्टली. एंड मैं ये चीज बोल रहा था ना, यूरोपियन Current फुटबॉल getting में lifted. या एक चीज हो गया है ना कि एशियन प्लेयर्स और अफ्रीकन प्लेयर्स को एक गंदी लाइट से देखा जाता है कि हाँ Yeah. ये सऊदी प्रो लीग से आ रहा है, ये जे लीग से आ रहा है, ये कोई अफ्रीकन लीग से आ रहा है, इज नॉट गोइंग टू बी गुड. आई एम सॉरी, यू हैव मोहम्मद, मतलब एक पॉइंट पे तो ऑब्वियसली अगेन ही इज इजिप्शियन wherever he played. Saud Abdul Hamid is actually a good player. Let me be very clear. Shomurodov, if Mourinho didn't ruin him, he's a good player. अब जापानीज प्लेयर्स को देखते हो, सो माय पॉइंट इज कि उसको खिलाओ यार. I mean, he's a physical player. लाओगे नहीं तो डेवलप कैसा होगा यार? Exactly, and he is a wing back that bombs and all. I didn't understand Zeki Chelle क्यों, By the मतलब. way, I understand जब भी तुम लोग ने इंटर के गेम में बोला था that he should not start. I तो wanted him to see that. But अभी ये सब गेम में नहीं खेलोगे तो when is he going to get that I confidence? don't get it. अरे Blame against यूरोपा लीग Dynamo भी नहीं Kiev. खेला. In fact, या वो भी नहीं Hummels खेला. को भी Dynamo Kiev में खिलाना चाहिए था ना, because तुम 1-0 हो already. You bring Hummels on. He's got European experience, man. ऐसा थोड़ी वो youngster थोड़ी है वो. Yeah, exactly, I agree. दिव्यम नहीं यार, मतलब we don't care much for the Ballon d'Or given the state of it. But apparently, वो अपना जो account है ना, Ayak, the European lad, that arrogant guy. I mean, he's too arrogant, but whatever. He's apparently posted a leak, and so far in that league, the order has been 100% correct, and in that they have Lautaro at 7th. They have Vinicius at first. So वही जोक बोल रहे कि imagine if he actually still wins it and he doesn't show up for the ceremony. नहीं होगा वो नहीं होगा. वो नहीं होगा. ये तू वो advance Ballon d'Or has become like film fair award कि अगर मेरे को अवार्ड जीतेगा तो मैं आएगा, वरना मैं नहीं आएगा. भाई वो रवि का कमेंट है ना, वो रवि का कमेंट परम भाई ये वाला किधर गया? Imagine if Roma get Dortmund because Param loves Terzic, उसको बहुत अच्छा लगता है वो मैनेजर. हाँ, Hummels और उसका relationship is shit. Yeah, it's quite bad. पर परम थोड़ा वो मैनेजर तेरे को इतना अच्छा लगता है तो उसके लिए दो अच्छी चीजें बोल दे यार. I don't rate him. Look, I think I am also a bit overcritical towards him. I don't think he's एकदम, मतलब उसको कुछ tactics आते नहीं है, वो नहीं बोलना चाहता, but I don't rate him that much. अगर आप बोलोगे top manager, absolutely no way. I don't rate this guy. Just और वो tweet बंद करो, he was in the stands as a fan in 2012 in Wembley. Yeah. That's total bullshit. He had a ticket from Borussia Dortmund because he was a scout for the youth team, man. उस fan की तरह नहीं गया था, उसको ticket दिया था. Like, stop that nonsense. So they want to make they love making all these wonderful stories and small club. PR stories है सब.
यहाँ Yeah, PR स्टोरीज है यार। इतना गुस्सा आया था मुझे उस दिन, बोला था भाई स्टॉप दिस बुलशिट यार। बढ़िया। लेकिन तो हमल्स का सोच ना, मतलब हमल्स came for De Rossi left, did not make his debut, made his debut, own goal and a defeat, and then if Terzic is like, मतलब he's been like, क्या पाप किए मैंने पिछले जन्म में जो मेरे को सजा मिलती है अब। Yeah, Hummels एकदम he would ingrain that whole Roma वाला DNA in him. Uh, हाँ Joao This is a Schneider. good comment. This is a good comment. Yeah, 7-1. Fiorentina had also smashed you 7-1. Na? Surprisingly, when Fiorentina beat Roma, it's with heavy score lines. Yeah, वही मैं बोला It's ना थोड़ी देर 1-0, पहले. 1-0, Exactly, it's 1-0, always heavy score lines whenever they beat you. It's quite funny. and it's mostly a very huge implosion because Fiorentina are a side who themselves are very prone to Yeah. implosions. So, But वो when ऐसा we होता होगा. crash, I think maybe we missed a trend. Maybe whenever Fiorentina beat you guys by a heavy scoreline, they remove all that pent up anger on Roma. चलो आज मार हाँ, देते हैं. आज रोमा आज को मार तोड़ देते देते हैं। हैं. but अजय के लिए कितना खराब दिवाली गया। इंडिया loses the test series after like 12 years। मैं मतलब जा वो रहा हूँ सीरीज वाकड़े जा रहा हूँ अभी तीसरे टेस्ट मैच के लिए। रोमा. हाँ मैंने तो है मेरे पास टिकट। लेट्स सी वो दिवाली के टाइम पे। आजा बट आजा 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 कौन से दिन पे तू जा रहा है? फर्स्ट डे पे जाऊंगा यार, फर्स्ट डे पे जाके ही खत्म करूंगा। इट इज जो फर्स्ट डे में ही ये आएगा। देन लेट्स सी इफ आई कैन कम फॉर द अदर डेज आल्सो, बट एट लीस्ट फर्स्ट डे आई विल बी देयर। या यही आ रहा है अभी चलो, तक चलो, तो ठीक है। कैल्चियो मार्का तो इज आल्सो सेइंग एट द मोमेंट यूरिच इज सेफ बिकॉज उनको ड्रेसिंग रूम पे ज्यादा ये नहीं करना है व्हिच इज आई मीन या हमिल्स मस्त एकदम यार। ये वीडियो क्या है? ये हमिल्स एकदम सज धज के बैलेंडोर सेरेमनी में आफ्टर द वन गोल। कहां पे? लिंक भेज। You know, Lautaro from our end, Lautaro, Sommer and Hakan have won. ये देख लो, I'll be leaving the stream in like the next 2 minutes guys. थोड़ा Same. काम आ गया. बाय द ये वे link फिल फोर्डन 11th पे आ गया। interesting. Lukman should be higher, no? He won the Europa League. I mean, बट यार एंड वो स्कोर्ड तो अ हैट्रिक। well, yeah. then I Wirtz is finished 12th. So Wirtz so definitely should be higher than Phil Foden. Yeah. I know, but Yeah. ए यार छोड़ो, हम लोग तो वैसे भी कहाँ इस अवार्ड के बारे में इतना फर्क पड़ता है. We should do Calcio चर्चा डॉर और समथिंग, कुछ तो नाम करना पड़ेगा. अपने को नया इनोवेटिव नाम सोचना पड़ेगा. That's Hummels. Look at the confidence after the own goal, man. This is quite funny. 29th less भाई, than 24 hours after he scored disastrous भाई debut. तुम लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हो? 29th बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है, उसको एक ओन गोल से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। डॉबिक तो मस्त एकदम ऐसा यूक्रेनियन टैंक लग रहा है यार। Seriously, look at him, man. Oh, does he smile? Ajay, does he smile also? He does smile. It is scary. वो रॉकी में था ना अपना। हाँ, dude, Ajay, he reminds of like पहली बार तो when he plays also, t-shirt tucked in, pants ऊपर तक like high tucked in, jersey पहन के यार मतलब yeah man, it's amazing to watch him यार. But I just hope eventually everything clicks, man. Yeah. टॉप 10 तक आ गए हैं यार। बट बाय द वे कई लिस्ट में जो बैलन डोर के कई लिस्ट में लौतारो तो टॉप 10 में भी नहीं था। अरे वो तो एक्सेल शीट पे टाइप किया हुआ दिख रहा था। आई कुड सी लेफ्ट पे जो नाम था वो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट पे था, राइट में जो नंबर्स थे कैलिब्रा फॉन्ट पे थे। इट वाज क्वाइट फनी, यू कुड एक्चुअली टेल वो तो टाइप किसी ने एक्सेल करके डाल दिया था। बट लुक, वी सेड बैलेंड और बात नहीं करेंगे, वी वोंट। आई पर्सनली फील थोड़ा बायस के साथ, थोड़ा नहीं बहुत बायस के साथ, ही शुड विन इट, व्हाई नॉट। इतने टाइम के बाद इंटर प्लेयर आ रहा है, आई फील ही शुड विन इट। बायस, पूरा बायस डालूंगा मैं तो। So whatever, it is controversial, but whatever, I think he should win it. Why not? For me top 3 तो होना चाहिए था। I तो actually loved Danny Caraval actually. Like I hope he does well. I think यार मतलब UCL जिताया, the way he played, even the Euros. I think अजय ने भी बोला था किधर Danny Caraval should have been quite high. Like I hope he does finish in top 10 at least. But yeah, I agree. ये एक है ना प्रीमियर लीग मीम मिला है 10 हैक पे, but if you show it, this is quite funny. I'm sorry अजय भाई, just see this. This is quite hilarious. This is a 10 हैक मीम, but ये मेरे अपने कैल्शियो चर्चा वॉल पे पॉप अप हुआ for some reason, and this is hilarious. I'm sorry. हम लोग इतना बात कर रहे थे ना, 10 हैक तो रोमा, 10 हैक तो रोमा पकड़ के चल लो, अलगोरिथम ने पकड़ लिया। I'll take your leave guys into ये मैंने मीम देखा हुआ है, but it's too funny. Let me share it.
and we'll wrap up soon. We'll just take a last few Yeah, comments I'll and take we'll a wrap leave up. in after this meme. I just have some work. So ये देखो यार ये क्या है ये? Babu, Babu. Oh God, God. Bapu. Dude, come on, yeah. Like I know it is. There are Liverpool fans who are posting unka 7-0 win. Thanks for the memories. Thanks for the Yeah. memories. चलो guys, I'll Fair, take your leave. I have some work, so yeah, तो आप fair लोग enough. Fair enough. बात Fair बात enough. कर लो. See you guys soon. यार मिलान नापोली देखते हैं अगर कल प्रीव्यू कर सकते हैं because कल ही सेरिया रिज्यूम हो रहा है यार. Right, That's the right, thing. right. So let's see if we have time to do a Milan Napoli preview or at least maybe a review after the game. Uh, I wanted a preview because Chintan भाई और योगेश के बीच का जो banter रहता है that's always something. So hopefully we I can. think we will wrap up the stream now only. वैसे भी last few comments है तो दे दो, but चलो. Param before you leave, Param before you leave, please award Roma Rigore the Hilale Lazio Yeah. award for this meme. I This is our winner. This is our winner. Yeah, Brian Cristante. classic meme. Classic meme made a classic by the fact that he's wearing a classic jacket with a hi-fi iPad on a posh train, and then this is what he's obviously allegedly watching as a joke. पर यार क्या meme है? This is gold. The fact that there are 2 million views, 2012, it makes it even more funny. But yeah, if Roma Rigore is watching this by any chance, you have won a मैंने prestigious इसको award. टैग किया, मैंने इसको ट्विटर में टैग किया है Tag इसको. किया है, maybe Ajay bhai will give Repost. to the Totti jersey behind. नहीं, I'm you sure will he get a already proper has it. trophy. I will design it. Hilale Lazio Yeah, trophy. Prestigious Hilale trophy है Lazio. वो. Yeah. Maybe we'll have to do like Tapiro Doro version of Calcio Charcha soon. Hilale Lazio. Hilale. Oh, Hilale. that is a common award. We will give a Hilale Lazio. Anuvuti won't let it happen, I guess. But yeah. Era's come to an end. Goat Cristante, I guess. Yeah. I think Cristante की बात करे कि टेन हैग की बात करे. अरे टेन हैग की बात करे because he said Ten that Hag. Liverpool, no disrespect to Liverpool and City. क्या Yeah. that quote has backbitten him so badly. The era's come to an end, man. Like amazing, Yeah. man. But यार चलो यार, even I'm also up to it. Yeah. We have India's test match also coming up. We'll talk about that on Ajay's stream whenever we get the chance. I hope it's not a brown wash. Hope it's not that. So whitewash तो बोल नहीं. Let's meet up at the Wankhede. Yeah, I think मेरे पास I think मेरे friend ने 5 दिन का ही पास लिया हुआ है. So मिलते हैं. I'll connect with you. करते हैं वो लोग, मिलते हैं बाद में. Sounds good. All right, guys. Thank you so much for tuning in. All your comments. I hope we've taken all the comments. But अगर कुछ miss out हो गए तो sorry. We just are short of time tonight. But Subscribe करो भाई दोनों channels को. We are waiting for the count to go up on both channels. yeah. Until next time, stay tuned. Yeah, Stay tuned. More content coming your way though. Ciao. Ciao. See you soon. Ciao. Night.